In today's class, we will try to understand in C language how to take user input. Okay. In C++, in previous classes, we studied that how to take user input by scene. Generally, in C++, Cout will be used to see the output on the screen. Cin is used to take the user input from the user. Like in C, how to take user input in C language. Generally, printf function is used to see the output on screen. Okay. So in C, to take user input, we use the scanf function. Scanf function. Okay. So let us see how the code will be written. अभी क्लास में सी लैंग्वेज में आज की क्लास में सी लैंग्वेज में यूज़र इनपुट को कैसे लेते हैं. सी लैंग्वेज में स्क्रीन के ऊपर आउटपुट को देखने के लिए प्रिंटफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं सी में. सी प्लस प्लस में सी आउट. ओके. इनपुट के लिए सी इन. ओके. पाइथन में प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल होता है इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन. सो सी में इनपुट फंक्शन के लिए हाउ we will get user input, how we can take the input from the user. So let us see. First of all, create an integer variable. Okay. So that variable will store the number from the user. Okay. Create a integer variable. So that variable will store the number given by the user. Okay. Int mynum. This is a variable. mynum is a variable. You can change this variable. mynum को आप xyz आपके नाम से मेरा ना किसी कोई भी वेरिएबल हम लग सकते हैं. सो इंटीजर डाटा टाइप है. ये mynum स्टोर करेगा. दिस mynum वेरिएबल स्टोर्स द यूजर इनपुट. ओके. सो ask the user to type a number. So printf type a number. This type a number that will be shown on the screen to request the user to feed a number, to type a number. Okay, printf. Okay. First of all, we need to create a variable. That variable stores the user input, that is integer data type, and ask the user to type a number. Okay. Here backslash and use it to get a new line character. To get a new line, get and save the number the user types. Okay. Get and save the number the user types. Then scanf function. I told you that scanf function use it to take the input from the user. So this is the percentage d method. For percentage d format specifier. I told you in previous classes in C language, format specifiers are used to indicate the C compiler. Now we are working with which type of variable, which type of data type. D will be used to this format specifier. D means now we are working with integers. Okay. Next, output the number the user typed. So now printf, use printf function to output the number. To output the number. Okay. So this is the way to, let us see the code. The same code, we will delete the code here and then we will write the fresh code. This is the code syntax in C language. First of all, include stdioh. That is the stdioh is a header file.
which will be used to work with input output functions. Here our output function is printf, input function scanf. If you want to work with, आप दोनों printf scanf function के साथ काम करना चाहते हैं तो stdio.h ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा. इंक्लूड मीन्स इम्पोर्ट. ओके. नाउ इंट मेन फंक्शन, सी प्लस प्लस में भी मेन फंक्शन को लिखते हैं सो दैट compiler of C looks for main function within the flower braces. Whatever the instructions are there, they will be compiled and executed. Compilation execution मैंने previous class में बताया था. So first of all, एक variable को we need to create an integer variable. So that integer variable will store the number from the user. So if we create a integer first, that is a variable, so it receives the data from the user. So int my num. Next, prompt the user, ask the user to type a number and press enter. Okay. Next, scanf for what? Scanf for to take the input from the user and save the number in variable. Okay. And ampersand symbol will be used in C language to represent the memory address. So here this AND symbol, that is called the reference operator. AND symbol, that is called here AND symbol, that is called AND symbol is called reference operator. So reference operator, normally what happens, whenever a variable is created, so for that variable a memory address is assigned. Okay, every variable, whenever a variable is created, so that variable a memory address is allotted, means that memory address is labeled with a variable. So whenever we assign a value that variable, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा वो मेमोरी लोकेशन में. सो टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन, this reference operator AND symbol will be used. Understood that? AND symbol is called reference operator which will be used to access the memory address. मैंने बताया था कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस होते हैं. हर मेमोरी लोकेशन को एक वेरिएबल के नाम से जानते हैं. एक वेरिएबल, हर मेमोरी लोकेशन के नाम रखते हैं, उस नाम को वेरिएबल कहते हैं. जब भी डाटा स्टोर असाइन करते हैं उस वेरिएबल को, उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है. whenever you want to access that data from that memory location, we need to call the variable. So here reference operator AND means to access that memory location and where the data is stored in that variable. Okay, so now whenever you press any value here 3, so whenever you press 3, that will be, whenever you press 3 here now and then enter. So your number is 3. So now we will totally, the code will be erased from here and we will write the code from the 0. Okay. Total remove this one. I told you that in the previous classes, if you don't have any laptop, don't worry, we can write the code, efficient code in mobile.
We can write the code in mobile. Any language, C, C++, Java, Python. This is the web editor, online web editors. In websites, so many websites are there, w3school.com, java t-point.com. You study the code there, understood that, and erase the code, you can practice there. Otherwise, lot of mobile apps are there, coding C, coding C++, PyDroid 3, JVDroid for Java, PyDroid 3 for Python, like that. So now write the code from here. Hash include, stdio.h, stdio.h. This is the main header file to work with input output functions. Next, int main function. In C and C++ both are same. This is very important, flower braces. Within this int main function, C compiler looks for this main function. Inside of this जो भी इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं उनको वो एग्जीक्यूट करता है. नाउ हियर लिखिए फर्स्ट comment, create a variable. Create first, what is our topic? How to take user input. To take user input. Today's class. First, create a variable. Create a variable. Int any variable name x. Okay. Okay, one variable created. So a variable, this variable will store the user input. Whenever user inputs a number, whenever he types on keyboard, so that inputted number will be stored in this x variable. Then after, first of all, we need to ask the user to type a number. So printf function will be used here. So which type of number we need to info the C compiler. We are working with which numbers? Integer number, because your integer created. So then after you write like this, enter a string, enter a number. You are requesting the user, so please enter a number. Okay. Next, so enter a number. You are requesting a user to enter a number. Then after what type of instruction? So whenever he enters a number, so then we need to use scanf function. Why scanf function? Whenever user enters a number, so scanf is a function which will be used to receive that input, to take the input, to take user input. So scanf what? We need to mention here scanf for what type of function. We need to mention here scanf function will be used. We need to mention here this is which type of data we are taking from the user. That is, D means format specifier, means the input number is integer. Okay, then that will be stored where? At x. So I told you that reference operator we need to use here. So reference operator always used to indicate the memory address, to access that memory address of that
variable. So x is a variable created. So x is created variable means there is a memory location. To access that memory location, and means reference operator will be used. Next, scanf terminate with the semicolon. So printf in C and C++, every instruction must be terminated with semicolon. Printf also must be terminated with semicolon. Next, scanf to be terminated. Now we need to get output on the screen. See what happened. One variable created x, that is x integer type of data type. Then printf means enter a number. We are requesting a user to enter a number. So which number? Format specifier D means integer type of number. Scanf function used to receive that input. So that input is stored where x variable. So ampersand means reference operator used to access that memory address. So we are indicating scanf function, the compiler. Now we are stating, we are helping the compiler that we need to work with integer values. Percentage D means हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि परसेंटेज डी मतलब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कंपाइलर को ये बताता है अभी हम लोग इंटीजर के साथ काम कर रहे हैं. कंपाइलर को कंफ्यूज ना करते हुए हम लोग स्कैनफ फंक्शन इस्तेमाल किया, उसके अंदर ये बताया कंपाइलर को, देखो अभी हम लोग इंटीजर डाटा के साथ काम कर रहे हैं. प्रिंट करते समय भी कंपाइलर को ये बता रहे हैं अभी आपने प्रिंट करना है इंटीजर नंबर को. ठीक है. सो नेक्स्ट, फाइनली प्रिंटफ इस्तेमाल करो और बताओ कि किसको प्रिंट करना है. प्रिंटफ किसको प्रिंट करना है? प्रिंटफ बताना है कि इंटीजर डाटा को प्रिंट करना है. किसको प्रिंट करना है? इंटीजर डाटा को प्रिंट करना. इंटीजर डाटा कहाँ स्टोर है? एक्स वेरिएबल के अंदर. क्लोज करो. नाउ ये अभी रन करो, इस कोड को रन करो. ठीक है. So the same code now I have written in Coding C app. It is a mobile app, so we can write the coding, efficient coding in your mobile. If you don't have any, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल के अंदर कोडिंग लिख सकते हैं. ये कोडिंग सी ऐप है. So मैंने बताया था कि I have told you that first of all include stdio.h. So stdio.h is a header file, okay, to work with input output functions. आउटपुट और इनपुट फंक्शन से काम करने के लिए हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा. इंक्लूड मीन्स इंपोर्ट. इंट मेन फंक्शन इज कंपल्सरी. सी so as I have briefed that, okay, int x created, a variable created, so that variable will be used to store the user input. उसके बाद printf एक स्ट्रिंग लगा दिया, एंटर ए नंबर. यूज़र से हम पूछे, वी आर रिक्वेस्टिंग द यूज़र टू एंटर ए नंबर.
स्लैश एन फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश एन यूज़ किया है नेक्स्ट लाइन के लिए। स्कैनफ इस्तेमाल किया कि स्कैनफ फंक्शन यूज़र से इनपुट लेने के लिए, जो यूज़र से इनपुट यूज़र जो इनपुट दे रहे हैं उसको कौन सा मेमोरी एड्रेस के पास स्टोर करेगा, एक्स एम्परसेंड एक्स मीन्स एक्स एम्परसेंड एक्स इंडिकेट करता है कि ये रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड रेफरेंस ऑपरेटर विच रिफर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, परसेंटेज डी डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा है कि दैट इज कॉल्ड योर फॉर्मेट स्पेसिफायर। हमेशा हमको कंपाइलर को बताना पड़ता है जब भी डाटा के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वी नीड टू help the compiler that now we are working with which type of data, whether it is integer. If we are working with integer data type, percentage d, otherwise we are working with any float, percentage f, any character, percentage c. Okay, like what next, printf. ओके, printf फंक्शन यूज़ किया है, एक स्ट्रिंग हमने इस्तेमाल किया है, योर नंबर इज इक्वल दैट स्ट्रिंग displayed on the screen and the value stored in x will be printed on the screen, and we are helping the compiler, we are working with integer. Okay, return 0 indicates that there is no any, means main function closed. Run this. Now enter a number, any number, 67543, this much of number, lengthy number I have. Now your number is what, 67543. So this is the way how to take the user input in C language. Okay, this is the way to use, very simple code है, मैंने बहुत बार बताया। सी लैंग्वेज में इंक्लूड stdio.h लिखते हैं, दिस इज सी लैंग्वेज। अगर वही आपको ऐप ये है, आप डाउनलोड करो सी कोडिंग ऐप सी के लिए मोबाइल के ऊपर, C++ कोडिंग ऐप C++ के लिए। पाइथन के लिए पाइड्रॉइड 3 है, पाइड्रॉइड 3, जेवीड्रॉइड है, जावा के लिए। ऐसे बहुत सारे मोबाइल ऐप्स मिलते हैं, अच्छा कोड लिखो आप, बहुत ही ठीक है, अच्छा कोड आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोड जैसे मैंने बताया कि हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h मीन्स हेडर फाइल है, इंट मेन फंक्शन, इनसाइड एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटेक्स, ये वेरिएबल एक्स, क्रिएट ए वेरिएबल, क्रिएट ए वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर, इस एक्स वेरिएबल के, क्यों एक वेरिएबल इसलिए क्लियर, वी नीड टू क्रिएट ए वेरिएबल वाई, सो यूज़र इनपुट दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस एक्स वेरिएबल। यूज़र इनपुट स्कैनफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, तो यूज़र से एक नंबर प्रिंट, एक नंबर को फीड करने के लिए, इनपुट करने के लिए printf फंक्शन इस्तेमाल करके स्क्रीन में एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं यूज़र को, प्लीज़ एंटर ये नंबर। सो बैकस्लैश n इस्तेमाल किया नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर के लिए। स्कैनफ फंक्शन इस्तेमाल करके हमने यूज़र से जो इनपुट, यूज़र इनपुट करते हैं उसको स्कैनफ फंक्शन रिसीव करके कहाँ स्टोर करता है, इस एड्रेस के ऊपर, कहाँ, एक्स का एड्रेस को, एम्परसेंड एक्स मीन्स उसकी मेमोरी एड्रेस बताता है, एक्स का मेमोरी एड्रेस, उस एड्रेस के ऊपर स्टोर करता है। प्रिंटफ फंक्शन डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर एक्स के अंदर जो वेरिएबल, एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ नंबर को, ये परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, so it indicates the it helps the compiler, we are working with now what, which number, we are working with integer number. See, suppose if you want to feed, if you user is feeding
float number. So create a float variable, okay, x. Now here this percentage d you need to use f. Why? Because now we need to help the compiler that we are working with float float numbers, okay. At the time of print also we need to help the compiler. Now we are printing what? Float numbers. Now run this code, enter a number. Here you need to enter float value, okay, 45.786. Your number is equal to 45.78. So if you if you want to take a user input as a float, the float data type to be declared and variable that must be float variable. At the time of printf time, okay, at the time of scanf means scanf function will be used to take the user input from the user. So we need to compulsory, इधर जरूरी है फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ को आपने बताना है कंपाइलर को. वी आर वर्किंग विथ float numbers. So format specifier f means we are working with what? Format specifier. We are working with float values. Suppose if you are working with characters, so you need to declare this data type as char, okay. This x variable is a char data type variable. It stores character values. Here we need to use format specifier as C. Next, at the time of print, we need to mention this as character. Now run. Enter a number. Only one character we need to represent. Your number is equal to C, not number. We need to write this as a character. Okay. Enter a character. Enter a character. Enter a character. Now next, your number here you need to write this as a your character, okay. Now run your code, enter a character, any character, suppose one character u, enter. Your character is equal to u, okay. If you use any number in place of character 6, I think it will give error. Your character 6, so any one letter will be taken as a character. So if you use any special character like any star, ampersand, percentage, dollar, so it will be considered as one character. If you feed dollar and enter your character dollar, so this is the code for your what? Scanner taking user input through scanf function.